आज हम बात करने वाले हैं पैंक्रियाज के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैंक्रियाज। सो बेसिकली pancreas, where is pancreas? So the location of pancreas, first we will see the location of pancreas. I think here not given. uh, let's see in the okay. So basically ये देखिए, ये आपका ह्यूमन बॉडी है पूरा। दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ओके, हेड, चेस्ट रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। इन द एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, ये एब्डोमिनल रीजन, हियर एब्डोमिनल रीजन, इन दैट वी हैव pancreas. So this is the pancreas. This is the pancreas. This is the pancreas. Okay, so basically this is the pancreas. So pancreas is located in the upper left quadrant of the abdominal cavity, extending from the curve of the duodenum to the spleen. Although the pancreas is both an exocrine gland as well as endocrine gland, only its endocrine function will be discussed here. The okay, so the pancreas कहाँ पर है? ये देखिए, आपका जो ये स्टमक है, स्टमक के पास ये है आपका स्टमक है। स्टमक के निचले हिस्से में आपको देखने मिलेगा लेफ्ट साइड अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, ये अपर क्वाड्रेंट है। जब हम पेट को इस तरह फोर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये अपर क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। इफ यू डिवाइडेड द स्टमक इनटू फोर divisions, that is, this is the upper quadrant. Okay, right and upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant. So the pancreas are situated in this area. So pancreas कहाँ पे है? ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है। जो इसके नजदीक क्या क्या है? स्प्लीन है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा डिओडेनम है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। Okay, so it is connected to the spleen and as well as duodenum. So it have two functions. अब पैंक्रियास की कितने फंक्शंस है? दो किस्म के फंक्शंस है, एक एक्सोक्राइन भी और एक एंडोक्राइन। सो एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन जो है आपको डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपको हार्मोन्स रिलीज करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉर डाइजेस्टिव पर्पस। Okay, we will discuss in digestive system. Exocrine. Endocrine, it have hormonal functions. Means it will directly release into the bloodstream. Endo means ductless. It will release the substance in direct to into the blood. But exocrine, it will not release the substance into the blood, but any extra or any other organ. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक है पैंक्रियास के बारे में, और पैंक्रियास के दो फंक्शंस है, एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, यानी वो अपना जो भी उसका आउटपुट है वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, डाइजेशन के लिए वो यूटिलाइज होता है। दूसरा प्रोडक्शन है, वो भी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है, यानी वो ब्लड स्ट्रीम में उस चीज को छोड़ता है, और उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स को बनाते हैं वो सेल्स, उसका नाम क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियास, पैंक्रियास का जो the part of the pancreas which produce hormone, that is called islets of Langerhans. So basically this is the pancreas. Okay, this is the pancreas. So which produce the hormone, the islets of Langerhans. They contain, so this is the pancreas. Okay, in that we have one area which produce uh, which cells are called Langerhans. So which produce alpha cells. Okay, it have alpha cells, beta cells, and gamma cells or delta cells. Alpha, beta, and delta. Okay, alpha cells and beta cells, which are very, very important here. Alpha cells produce glucagon. So this alpha cell produce glucagon. In the Langerhans, we have alpha cells, beta cells, and gamma cells. So alpha cells produce
glucagon. So what beta cells produce? Beta cells produce insulin. So these are the two important things we have to remember. So again, we will see Langerhans. What is the Langerhans? Here we have this is the pancreas. Okay, this is the pancreas. Okay, this is the pancreas. So यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पैंक्रियास है। ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ओके, ये ही सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसी को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो डक्ट दिख रहा है ये एक सिस्टम है, ये आपको डायरेक्टली क्या है, ये ड्यूodenum एरिया, दिस इज द ड्यूodenum एरिया। एक ऊपर से भी आ रहा है, ये एक है, ये दो मिल रहे हैं। ये है गाल ब्लैडर का डक्ट है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों मिलते हैं यहाँ पे देखिए, ये दोनों मिल रहे हैं और मिलके यहाँ पे अपना सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं। तो ये गाल ब्लैडर से आ रहा है। जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या समझाना है हमने को, ये सेल्स दिख रहे, देखिए ये सेल्स जो है आइलेट्स। तो दिस इज डायरेक्टली अटैच टू द blood cells, blood vessels. So these are the blood vessels. So it have produced. You can see zoom by zoom it. Okay, you can see that this is the, if you zoom it. Okay, ये देखिए, ये zoom करने के बाद यहाँ पे ये है alpha cells, these are the alpha cells, beta cells and exocrine acinar cells. Okay, acinar cells. Okay, alpha, beta and delta. Okay, this is the islets of Langerhans, these cells. Okay, these are the acinar cells. So alpha produce glucagon, beta produce insulin. So let's talk about in detail. So you understood till here? So first we will talk about glucagon and then after insulin. So you have to understand both things. First we will talk about glucagon. What is glucagon? So basically whenever you eat the food, okay, you chew it, after that it will enter into the stomach. The stomach will do chyme. Okay, it will make into small particles and after that it will enter into the small intestine. The small intestine try to absorb it. Okay, then afterwards what will happen, it will enter into the bloodstream. Whatever things we eat it will enter into the bloodstream. Okay, after that bloodstream, if we utilize those substances, whatever uh, things are there, it will convert into the glucose, it in the form of glucose. Okay, if we utilize it, it will utilized as energy. But if you not utilize, if you are eating and sitting like that, what will happen, the body will store it. Okay, okay, it will store it. The storage form of glucose is nothing but glucagon, is nothing but glucagon. So it will stored, the glucose is stored. So if you want to release the stored glucose, you need glucagon. Okay, if you want to store the glucose, you need insulin. Okay, so if you want to store the glucose, the energy, you need insulin. So if you are not working, you are laying down, so always you are eating, so what will happen, the insulin will take the glucose, it will store into the some place in the body and your fat will increase. But if you are eating and doing work, exercise, everything, the stored form of glucose is utilized as energy. So who will do that? It will done by glucagon. Okay, it will done by glucagon. So this is the simple concept you have to understood. Okay, so if you want to understand the pancreas, okay, understood. So glucagon stimulates the liver. So it will go to the liver and it will excite the liver cells and do, please, whatever stored energy of stored form of glucose, that is glycogen, you have to release, you have to do is to glucose. Okay, this process is called glycogenolysis. So
ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लूकागोन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इसको मदद कौन करता है, ग्लूकागोन, ये हार्मोन है। ये हम हार्मोन जब आ जाता है ब्लड में, तो लीवर क्या करता है, ग्लूकागोन जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसको रिलीज, ग्लूकोज बनाने लगता है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना, जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको ब्रेक करना। ओके, एंड टू इंक्रीज द यूज ऑफ फैट्स एंड एक्सेस अमाइनो एसिड्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये उसके बाद अब जब रिलीज होगा तो ब्लड में तो क्या यूटिलाइज होगा, हम काम करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम फंक्शन करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो जैसा जैसा हम वर्क करेंगे यूटिलाइज होते रहेगा। तो ये यूटिलाइज होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मीन्स मेकिंग ऑफ न्यू ग्लूकोज। सो यहाँ पे यही हो रहा ना। तो ग्लूकोज जो स्टोर्ड था उसको हम ब्रेक डाउन किया, जिसको हम कहेंगे ग्लाइको जिनोलाइसिस। जब ब्रेक डाउन हो गया तो उसको यूटिलाइज करने लगे। यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, so it will, whatever excessive amino acid it convert into the simple carbohydrates. Okay, that will enter into the cell respiration. Okay, then the glucose level increase. तो जैसा ही आपने खाया, आपने ग्लूकोज जो स्टोर्ड था वो ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, सो इट विल इंक्रीज। Okay. The secretion of glycogen is stimulated by hypoglycemia. A low blood glucose level, such state may occur between meals or during psychological stress situations such as exercise. So when glucagon is released into the blood, so ये glucagon जो है हार्मोन, ये कब रिलीज होगा ब्लड में, ये रिलीज होगा जब आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा। ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल कम होगा उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। सो ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। सो हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तो ब्लड जो आपका नॉर्मल होना चाहिए आपका 80 to 110। ठीक है, तो 80 से कम अगर होगा, जितना कम होगा उतना सीवियर आपका हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, whenever a patient came to a clinic, so you notice the symptoms of hypoglycemia. Heavily sweating. Sweating is the main symptom of hypoglycemia. Then some patients have respiratory effect, hollow breathing. Some patient will have giddiness and they fell down. So कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं चक्कर आके गिर जाते हैं, पसीना आता है, घबराहट होती है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सो व्हेन हाइपोग्लाइसीमिया occurs, what will happen, glucagon is released from the islets of Langerhans from alpha cells. Okay, it will stimulate the liver to do glycogenolysis. Okay, then after glycogenolysis what will happen, glyconeogenesis will happen. So the glucose will increase in the blood. Okay, then the glucose enter into the cell by help of insulin. Okay, and it utilized by the cell, then the cell will produce the energy production will happen. So this is the process. So ये है पूरा प्रोसेस ग्लूकागोन का जो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इंसुलिन टुमारो इन डिटेल। ओके।